कॉमन मिथ ये है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड विल गिव मी एम्पल ऑफ प्रोटीन। आज हम इस मिथ को ब्रेक करेंगे। देयर आर 5 powerful vegetarian sources of complete protein. If your hair is thin and there is a show of scalp and is falling like crazy, maybe your body is shouting of give me natural protein. Why I'm saying complete? Because complete means it contains all essential 9 amino acids जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। तो जो भोजन हम करते हैं अगर उसके अंदर वो हैं तो डेफिनेटली सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। So by the end of this video you will come to know those important food items जिनको खाने से आपके essential amino acids की requirement vegetarian तरीके से पूरी हो जाएगी। And the number 3rd and number 5th are really awesome. Do press the like button and now let us start. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon and today we'll be talking about 5 natural complete protein sources for good hair as well as good body. I have been working as a hair doctor at Saraswat Hospital, Agra for past more than a decade. The first natural source of complete protein is rice and wheat along with lentils or legume. जो age old हमारा थाली सिस्टम है in which हमारे दाल चावल, रोटी छोले, then नए जमाने के बच्चे pita bread and hummus, ये जो भी कुछ combination खाते हैं, this makes it a complete protein source. Why? Because see, rice and wheat being cereals जो grass family से मिलते हैं हमको, they are deficient in amino acid called lysine and lentils and legumes यानी फलियां और दालें they are deficient in methionine। तो जब दोनों का combination किया तो we will get all essential amino acids. Now a bowl of rajma चावल और छोले चावल will give me around 6 grams of protein. Likewise, a medium-sized pita bread along with 2 tablespoons of hummus will give me around 8 grams of protein. The second imported item which is very common and fancy nowadays in India is quinoa. It can be quinoa, the Indian version of it can be amaranth or ramdana, and also kutu ka atta which is buckwheat. All 3 of them are actually pseudo cereals. ये proper cereal नहीं है लेकिन हमको आसानी से available हो जाएंगे। 1 कप क्विनवा में around 8 grams protein है, जबकि रामदाना में 1 कप रामदाना में around 9 grams of protein है, और अगर कुटू का आटा ले तो 1 कप में around 6 grams of protein है। See how protein rich they are, and all 3 of them have all essential 9 amino acids. Now the exciting number 3. Number 3 is seeds, which are chia seeds and hemp seeds. Now what are hemp seeds? Hemp seeds are bhang ke beej. They are very rich in protein. 2 tablespoonful of chia seeds will give you around 4 to 6 grams of protein, and 3 tablespoonful of hemp seed will give you around 10 grams of protein. Now if you don't like them to consume in such big amount, you can always dry roast them and sprinkle them on your various food items like salads and paneer and other things. If I don't talk of nuts now along with seeds, it will be a bit incomplete. From ages, India has seen age-old tradition of having nuts as snacks. So you see, we have peanuts. Moongfali dana is so common. हम मूंगफली तो यूं ही चलते फिरते मुट्ठी में खा लेते हैं। मूंगफली 100 grams of मूंगफली will give you 25 grams of protein, and along with that they can be almond, walnut, pista and other nuts which will give you ample of protein. Almond and pista can give you around 21 grams of protein, 100 grams of the nuts. These nuts, when we combine with beans, make all essential 9 amino acids available to us. Thus, to have complete protein, nuts can be consumed along with seeds. Do subscribe to our channel for more such educational and testimonial videos. Number 4, paneer, जो आप अपने घर में बना सकते हैं। Cheese, then curd and Greek yogurt, जिसका दूसरा नाम है हमारे घरों में बहुत आसानी से hung curd, जो हम दही को हैंग कर देते हैं फिर उसमें लिक्विड निकल जाता है और एक गाढ़ा दही बचता है। That is important. Why? Because it doubles the amount of protein. एक कटोरी दही में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होगा, एक ग्लास मिल्क में 3 to 4 ग्राम प्रोटीन होगा, बट एक कटोरी हंग कर्ड में यानी ग्रीक योगर्ट में डबल प्रोटीन होगा, अराउंड 7.5 grams. Though it will be less in calcium, but it will be more in
protein. Paneer has 100 grams of paneer has 20 grams of protein. So it can be a very rich source of protein whenever you want to consume more protein. And सारे Indians को पता है कि पनीर हम खा सकते हैं प्रोटीन के लिए. अब जो exciting number 5 है, that is टोफू. आप बोलोगे टोफू इंडियन फूड नहीं है, बट एक्चुअली सोयाबीन तो इंडियन फूड है ना. टोफू आप बाजार से ला तो सकते हो, बट उसको घर में बनाना भी बहुत आसान है. आपको सिर्फ सोयाबीन भिगोना है, सुबह पीस लेना है मिक्सर जार में, एंड देन उसको आप कपड़े में छान के उसका मिल्क रेडी कर लो. जैसे हम कोकोनट मिल्क बनाते हैं घर में, जैसे आप पनीर बनाते हो, वैसे ही आप सोयाबीन मिल्क से टोफू बना लोगे. इट इज एज इजी एज आई जस्ट सेड इट. टोफू कैन गिव मी 85 grams of tofu can give me around 8 grams of protein. Now there are a few items which are vegetarian which give me complete protein, but they are not very common in India. हम उसको थोड़ा fancy item बोल सकते हैं. उसमें नंबर 1 पे आता है spirulina, नंबर 2 पे आता है nutritional yeast जिसमें saccharomyces होता है, नंबर 3 पे आता है mycoprotein जिसको corn भी बोलते हैं, और नंबर 4 पे आता है Ezekiel bread. अब लोग पूछेंगे Ezekiel bread क्या होता है डॉक्टर? It is very simple. आपके पास जितने sprouts हैं, wheat sprouts, barley sprouts, millet sprouts, then मूंग sprouts, उन सब को आपको पीस कर फर्मेंट करके उसकी ब्रेड बना लेनी है. That is Ezekiel bread and it is full of protein and light on the stomach also because it is already fermented. If you have anything to write from your part, you can write in the comment section below. अगर आपको अपने हेयर के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं. Before coming to the end of this video, let me just quickly tell you कि आपको प्रोटीन चाहिए कितना नॉर्मली. यूजुअली अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते तो 1 to 1.5 grams per kg body weight. Like if you are 60 kgs, so maybe you require between 60 grams to 72 grams in a day. अगर आप intense workout करते हैं तो आपको फिर 1.5 या even 2 grams per kg body weight चाहिए होगा. So I asked ChatGPT to make a breakfast, lunch and dinner menu for me, a vegetarian menu, if I want to consume 90 grams of protein in a day. So this was the answer. If you want to know about best hair growth treatment, you can click the link on the left, and to know about best hair growth oil, you can click the link on the right.